Children, hope you've tried question number 1 all the parts, and now second question is saying Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay back at the end of 2 years and 4 months? So we've done this type of question earlier also where certain months were coming. So what did we do? First we will for the 2 complete years. First you will find amount for 2 complete years. Okay. टाइम आपका 2 years 4 months है. प्रिंसिपल एंड रेट नोन एंड इट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है हमें. तो फर्स्ट अमाउंट फॉर 2 years p 1 plus r upon 100 to the power of n number of times इंटरेस्ट विल बी गिवन. तो पर एनम था, कंपाउंडेड एनुअली था, तो 2 times 2 years में 2 times आपको मिलेगा. तो n is 2. ओके, सो पुट द वैल्यूज आउट हियर. Cancel out whatever you can. 15, 5 3s are, 5 20s are, 20 plus 3, 23 in numerator, and square means multiply 2 times. Okay, फिर cancel आंसर करके this is your amount at the end of 2 years. अब ये 2 years के आगे जो बचे 4 months हैं उस पर अब आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लोगे इंटरेस्ट, कंसिडरिंग दिस अमाउंट एज योर प्रिंसिपल. ओके, तो ये जो 2 years के बाद का प्रिंसिपल हो जाता है उसे हम वापस यहाँ अमाउंट हो जाता है, सॉरी, उसे हम यहाँ पे प्रिंसिपल मान लेते हैं. सो विद दिस एज प्रिंसिपल and rate will remain the same. It was mentioned as 15 and time that was 4 months you will convert it to years because PTR upon 100 होता है ना SI का फॉर्मूला, तो उसमें T is time in years. Okay, so we will convert it to years. So we'll divide it by 12. 1 year has 12 months. तो 1/3 year हो गया. टाइम की जगह 1/3 आ जाएगा. ये रेट है. प्रिंसिपल की जगह ये 2 years के बाद का अमाउंट आ जाएगा. Cancel it out, calculate. That is your interest for the remaining coming 4 months. So the total amount will be, इतना अमाउंट तो हमारा 2 years में ऑलरेडी हो गया था, अभी इतना इंटरेस्ट आपको और मिल गया है, तो सम दिस अप. सो दिस वुड बी द अमाउंट दैट जो भी ये फेलो था, कमला या कमाला था, आई हैव नो आइडिया. ओके, विल पे. ओके, now beta third question is saying that Fabina borrowed 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and another one Radha borrowed the same amount, means 12,500 again for the same period, means again for 3 years, but the rate being 10% compounded annually. तो एक का SI हो रहा है, एक का CI होना है. Who pays more interest and by how much? तो हम दोनों का separately calculate करेंगे one by one. Like for Fabina, it was said amount was 12,500, rate was 12, and n would also be 3 only. Time 3 years था, but a compounded annually है तो 3 रहेगा. Okay, and anyhow this was simple interest. So SI is PTR upon 100, principal, time in years, and rate upon 100. Calculate 45,500 it is coming as. Okay, calculation खुद करना बेटा, आपको कॉपी नहीं करने. again I keep saying that. Okay, so try it on your own. Multiplication, division you have to learn. Then for the other fellow Radha, your कंपाउंडेड वो कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो ये फॉर्मूला निकालोगे आप अमाउंट का. आप सीधे भी कर सकते हो, अमाउंट माइनस पी भी कर सकते हो यहाँ पे. इट्स योर चॉइस हाउ यू वांट टू डू, और यू फर्स्ट फाइंड अमाउंट एंड देन फाइंड CI एज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो आई हैव टेकन आउट अमाउंट फर्स्ट हियर. प्रिंसिपल सेम अमाउंट रहेगा बोला था उसने, सेम चीज बोरो करी थी दोनों ने. इसका रेट 10% था एंड कंपाउंडेड एनुअली है, तो बाय दिस फॉर्मूला. ओके, n is 3. So work it out. This is coming as, this is the amount after 3 years. Okay, so this amount minus the principal will give you how much compound interest she had to give. तो इसने सिंपल इंटरेस्ट दिया है 4,500, इसने दिया है 4,137.50. तो नेचुरली इसका ज़्यादा है. योर क्वेश्चन वॉज हु पेड मोर, तो वी आर गोइंग टू से दैट फबीना हैड टू पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच पूछा था उसने, वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, कितना ज़्यादा उसने पे किया. तो इसने 45 पे किया, इसने 41 पे किया, दोनों का डिफरेंस इतना ज़्यादा पे किया. फाइन. तो योर फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर चिल्ड्रन, यू विल ट्राई दैट ऑन योर ओन. ओके, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है, सेम वर्किंग है, तो उसको आप एक बार ट्राई करना खुद कैलकुलेशन, बिकॉज कैलकुलेशन द मोर यू डू ऑन योर सेल्फ the better it is. Okay, दूसरे का copy करके there is no use. Okay, let's see the fifth one now. So for the fifth one, what has been said, Vasudevan invest rupees 60,000 at the interest rate of 12% per annum compounded half yearly.
what would he get after 6 months and after 1 year. अब हमारी compounding half yearly हो रही. We've done these type of questions earlier also, but again a revision. Okay, so principal mentioned, rate this much per annum था, बट ये अभी हमारी कंपाउंडिंग होनी है हाफ ईयरली, सो दैट वील कीप इन माइंड. सो फर्स्ट गो में हमें अमाउंट आफ्टर 6 months निकालना था. तो अमाउंट इज अगेन, आई हैवंट रिटन द फॉर्मूला चिल्ड्रन, बट व्हेन यू डू योर क्वेश्चंस यू विल ऑलवेज राइट द फॉर्मूला. एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, बिकॉज वी आर डूइंग इट इन कंटिन्यूएशन, सो आई एम स्किपिंग द फॉर्मूलाज टू सेव टाइम, but you will have to write the formula first. Okay, so I have put it straight away, but you'll write the formula. So amount is equal to principal 60,000 and rate, क्योंकि ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही थी तो ये 12% पर एनम था, तो हमने बोला था रेट हाफ हो जाता है, तो हम रेट को 6 लेंगे. ओके, एंड 6 months हाफ ईयरली मीन्स 6 months इज इक्वल टू हाफ अ ईयर. तो 6 months में कितनी बार इंटरेस्ट आएगा? एक ही बार आएगा. सो योर एन बिकम्स 1. For 6 months, only once you will get interest. So your N will become 1 year. Is that clear? Okay. So इसका calculation without cancelling ज़्यादा easy था. 0 zeros cancel हो रहे थे, तो I have straight away taken LCM. 100 plus 6, 106 upon 100. 100 gets cancelled क्योंकि power 1 ही थी. Multiply straight away and get your answer. That's the amount after 6 months. Then next was after 1 year. So after 1 year rate तो again compounded half yearly था, तो rate आपका 6% लेके चलोगे, and 1 year में 2 6 months होते हैं या 2 times. When we are saying compounded half yearly, तो half year 2 to half years हो जाएंगे उसमें, तो आपका n यहाँ पर 2 हो जाएगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, सो क्योंकि स्क्वायर था तो इसमें मैंने कैंसिलिंग कर दी है. कैलकुलेशन इज योर चॉइस, आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है वैसा करो. सो दैट इज द अमाउंट व्हेन यू हैव टू डू इट आफ्टर 1 year. Okay, so try these questions children to do them on your own.